सो पिला गोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करिया ठीक अछि रोज डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर डैश तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पचार देखो m1 l2 t to the minus 3 e to the minus 3 m for mass l for length t for time e for ampere तो चार्टा डायमेंशन फार्मूला अच्छी तेणु चारिटा डायमेंशन फार्मूला भितर को डायमेंशन फार्मूलाटा करेक्ट हम आम बाजिबा ठीक अच्छे तो आम सॉल्व केमती करिया पिला माने देख तो ये आम जाचु देख वी नो दैट okay so we know that V is equal to IR according to Ohm's law. This one is the Ohm's law. Ohm's law. So V is equal to IR आम कौन बाहर करिया रेजिस्टेंस बाहर करिया फिर R for resistance ये V माने होची कौन पोटेंशियल V means potential okay and I equal to current I is equal to current and R is equal to your resistance R is equal to resistance okay तो ये आम कौन बाहर करिया ना रेजिस्टेंस आम ये कैलकुलेट करिया तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कौन हम R is equal to V by I यही फॉर्मूला यूज करिया ओके बट V is equal to कौन बोले V is equal to वर्क डन बाय चार्ज नहीं तो वर्क डन W इक्वल टू कौन हो वर्क डन and Q is equal to charge okay Q is equal to charge so तो ये आम कौन करिया बोले ना R को रिप्लेस करिया R is equal to V को रिप्लेस करिया W डिवाइड बाय I into Q यही हो अगेन W इक्वल टू वर्क डन ना नहीं तेणु जो वर्क डन अच्छी तेणु वर्क डन रोचे कौन जो जानी न पार्छ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पारे बोले जो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस नहीं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं F मीन्स व्हाट F मीन्स फोर्स S मीन्स डिस्प्लेसमेंट F मीन्स डिस्प्लेसमेंट तो ये आम लिखिपर द R इज इक्वल टू एफ एस बाय आई क्यू ओके एबे हम डायमेंशन ऑफ फोर्स बाहर करिवा डायमेंशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट कौन आउ ये कन्वर्ट कर फोर्स इज इक्वल आम जान मास इंटू एक्सेलरेशन एमती भी आम फॉर्मूला आपको सॉल्व कर जाऊन से m1 l1 t to the minus 2 आपको मन रखा पड़ो डायमेंशन ऑफ फोर्स ठीक अच्छे एबार डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाहर करिवे डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस यार डायमेंशन बाहर करिया डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन फॉर्मूला कौन ओनली लेंथ टर्म ना नहीं तो आप लिखिए डायमेंशन ऑफ आई फॉर करेंट डायमेंशन ऑफ करेंट रो डायमेंशन कौन समस्त जानिछ डायमेंशन ऑफ करेंट होचे एम्पियर नहीं ये फंडामेंटल क्वांटिटी नेक्स्ट होचे डायमेंशन ऑफ चार्ज डायमेंशन चार्ज क्यू इज इक्वल टू कौन ए टी केमती है ए टी ना आई इज इक्वल टू करेंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम ना नहीं तो चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम यही फॉर्मूला आमको ये सॉल्व है तेणु एवं आम कौन डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बाहर करिया डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कौन करिया ना डायमेंशन ऑफ फोर्स डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन ऑफ करेंट डायमेंशन ऑफ चार्ज ना नहीं ताले वैल्यू समस्त पुट करवा ये डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल डायमेंशन ऑफ फोर्स होचे m1 l1 t to the power minus 2 so then dimension of displacement is l1 divided by current is already written a dimension of charge is a t okay so dimension of resistance is equal to कौन आसो m1 l2 t to the power minus 2 divided by ये कौन आसो a2 t to the power 1 ये आसो आपको आम सॉल्व करवा द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू m1 l2
t to the power केते -3 a to the power -2. ओके दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मैंने जानी पाइल ए हूँ डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रो फॉर्मूला तो यहाँ हूँ प्लेट हूँ आमर हूँ नीट क्वेश्चन पे यहाँ नीट क्वेश्चन देख ये जो डायमेंशन जो फॉर्मूला मुझे बाहर कली ये डायमेंशन फॉर्मूला कौटा करेक्ट हम आम देखा ऑप्शन ए इज सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट तो मोर ऑप्शन बी हूँ करेक्ट अच्छे सो देख समस्त देख ये कौन अच्छी ना फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर व्हाट सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी व्हिच वन इज करेक्ट आंसर so we know that so V is equal to IR according to the Ohm's law okay and V is means potential I means current R means resistance okay so we have to calculate the resistance that R is equal to V by I but V is equal to work done by charge W by Q W means work done and Q means charge so now for the value of V in this equation and this equation what shall we get R is equal to W by I into Q okay but again we know that work done is equal to W is equal to Fs force into displacement now substitute this equation so F and S IQ next the dimension of force so dimension of force m1 L1 T to the power -2 from this equation according to Newton's second law of motion so that is dimension of force is equal to dimension of mass into dimension of acceleration so dimension of mass is capital M and the acceleration is equal to L T to the power -2 so that is m1 L1 T to the power -2 yes or no your acceleration is equal to velocity by time okay again velocity is equal to velocity or displacement per time so that is acceleration is equal to displacement per t square okay the dimension of acceleration is equal to L and T is capital T square that is dimension of acceleration is L1 T to the power -2 okay this is the complete dimension of force so dimension of displacement is L only length term dimension of current ampere dimension of charge equal 80 now substitute all the values in this equation so this one the dimension of force dimension of displacement dimension of current dimension of charge so finally we get m1 L2 T to the power -3 A to the power -2 okay that means your correct answer is option B is correct thank you for your watching please like share and subscribe thank you